अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज मेरे जो खसूसी मेहमान हैं वो लाहौर घूम रहे थे। फिर बहुत सारी मसरूफियात थी उनकी, क्योंकि ये एक बड़ी डेलीगेशन आई हुई है साउथ कोरिया से, और इस डेलीगेशन में बहुत सारे अहम नाम मौजूद हैं। बहुत सारे साउथ कोरियंस हैं जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं साउथ कोरिया में, और कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं इस डेलीगेशन में जिनके कारोबार साउथ कोरिया में है। आपको याद होगा इससे पहली जो एपिसोड चली थी वीकेंड विद हिना पे, उस पे एक हमारे मेहमान आए और शुरुआत इस सिलसिले की उन्हीं के ज़रिए हुई, मुदस्सिर चीमा साहब। वो पाकिस्तानी है, ऑफ कोर्स नाम से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, लेकिन गए थे साउथ कोरिया और उधर के ही होके रह गए। लेकिन उनके दिल में जो मुल्क के लिए मोहब्बत थी वो उनको इधर वापस खींच के लाती रहती है, और उस खिंची हुई मोहब्बत के साथ वो इनको भी लाते रहते हैं। और इसलिए ये बहुत बड़ी डेलीगेशन जो आई हुई है, मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स को देख रहे हैं, और बहुत सारे इनके बहुत से इरादे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, सरमायाकारी करनी है, और एक म्यूचुअली बेनिफिशियल इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ साउथ कोरिया में नज़र आ रही हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग। लेकिन आप चौंक जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा आज मेहमान कौन है। मेरे आज के शो में 2 सेगमेंट्स हैं। जो पहला सेगमेंट है उसमें एक तो मेरे साथ हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर सॉन्ग हैं, और डॉक्टर सॉन्ग जो हैं पाकिस्तान बड़ा अरसा रह चुके हैं, बहुत साल इन्होंने इधर बिताए, और इन्हें पाकिस्तानी हुकूमत का सिविलियन अवार्ड सितारा पाकिस्तान भी मिला। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, आज मैं इन्हें ख़ास मुबारकबाद देना चाहूँगी इस प्रोग्राम के ज़रिए, बल्कि पर्सनली भी अभी दूँगी, लेकिन आपको बताती चलूँ कि फैसलाबाद की एक यूनिवर्सिटी ने इन्हें बल्कि आज एक ऑनरी डिग्री भी दी। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और साथ साथ बहुत सारी खिदमात इनकी पेश फॉर पाकिस्तान, बहुत इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अमेरिका भी बहुत अरसे तक रहे, वाशिंगटन डीसी में थे ये। वी विल फाइंड आउट मच मोर अबाउट हिज लाइफ ड्यूरिंग द शो, बट लेट मी नॉट फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस माई सेकंड गेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द शो टुडे, दैट इज़ मिस्टर ली। मिस्टर ली एक बहुत ख़ास काम करते हैं, और वो ख़ास काम उनका ये है कि साउथ कोरिया में इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके ये चेयरमैन हैं। आई वुड स्पेसिफिकली टेल यू इट इज़ द न्यू सेंटर फॉर वन कोरिया। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये साउथ कोरिया को कनेक्ट करते हैं, पूरी दुनिया को कनेक्ट करते हैं साउथ कोरिया से। वो कैसे? अगेन यू शैल फाइंड आउट ड्यूरिंग द शो। सो आई वेलकम डॉक्टर सॉन्ग एंड मिस्टर ली, एक्सेलेंसी। Mr. Lee, thank you so much for joining us. Thank you. I hope your stay is pleasant so far in Pakistan. Yeah, thank you. And like I said, Dr. Song, you must be very, very used to Pakistan. Is that correct? Yes. I served here as ambassador to Korea, ambassador to Pakistan, 2013 to 16. So I know Pakistan, what is Pakistan. So Pakistan is a kind of the land of the limitless potential country. So I persuaded Koreans, let's have more the time to communicate each other, to help each other, and trade, construction, and sports, sightseeing, many things. You can do it. Many things you can do. So I discussed with Mudassar Ali Chima how to enhance our relations, and he asked me, let's go to make some forum delegation. Right. So, and then which is visiting. Yeah, right, Pakistan. And then actually we discussed more 2 years ago, and then the pandemic and the other things we couldn't do that. This year, I think at the end of January, he called me as soon as possible. We meet, discuss. The team is composed of more than 40 members. Pure Koreans is about 20, and then the Pakistani working in Korea almost 20. So that's like a 40 to 45 yes, delegation. Half. And then the field is very famous, various. One is historian, culture people,
sports team. Sports team lastly they joined. They are the building taekwondo. You know taekwondo? Taekwondo is you don't know taekwondo. It's No, of course I know taekwondo. Yeah, taekwondo. I've done that when I was a child. Oh really? Yes. And one the taekwondo chairman, he wants to build taekwondo gymnasium, only gymnasium. Yes, I think Mr. Chima mentioned that during his last interview. And maybe $400 million for Pakistanis. And his team joined, 4 people. Right. And then also culture. Again, I didn't know actually who he is. Finally, he said he wants to build apartment and also infrastructure. He said, I'm very curious whether he has money or not. He said, don't worry about money. If the Pakistan is good, I will bring money, something like this. So now they are discussing now. They're in talks? Yesterday, we invited to the FPCCI, and then there are many Pakistani businessmen, also our side together. We discuss and then man-to-man the discussion. And last night they decided to discuss again the more detail. They are discussing now somewhere in Lahore. Okay, Dr. Song, you're visiting Pakistan this time. After how long? This time the 6 nights, 7 days. What kind of changes have you observed during this trip of yours this time? I persuaded the persons, Koreans, look into Pakistan better than you imagined. Right, and what sectors are they looking at? And first of all, one person is construction. He's very serious, and another one is sightseeing. So we were invited Kyrgyz-Baltistan Minister of Sports and Sightseeing, and we discussed about how to carry out the sightseeing. And our people, our delegation, they think now we are going to Kyrgyz-Baltistan in May or some June. And then another person is the apartment, sports, investment, agriculture. And why do agriculture field. Right. So next time I will introduce her. Would love to meet. She is also doing some business now in Lahore. She came to Pakistan 48 times. I heard that you're about to visit the Wagah border. Yes. So what's cooking there? Wagah border is a kind of borderline area. Yes, and of course. Also our country. So what's the purpose of your visit? Our country also divided into 2 parts in the Panmunjom area, very similar to the Wagah border. So I will bring my people what's going on in India and Pakistan borderline. I've been there many times. You have been there. But and this time there's another objective, yes, I believe. Yes. That's a very good plan, I must say. Well, I wouldn't like to keep Mr. Lee waiting here. Mr. Lee, you're the president for News Center of One Korea. When you say One Korea, what are you implying here by this forum of yours? In fact, Korea is divided, as mentioned by Dr. Song. Yes. So we are pursuing the unification of 2 Koreas, whatever so the way. you're talking about it may be. unifying North Korea and Right. South Korea through this platform. Exactly.
Right. And, And then it's a forum where you interact with the world through this forum? Right. In fact, we had a good interactions with Pakistan Embassy in Seoul, and the military attaché, whose name is Colonel Changes. So she got very interested, and we invited him several times to different forums Right. to discuss what Pakistan people doing in conflict zones. Like for example in Wagah border and Kartarpur corridor, what's happening in between Pakistan and India. Right. So it really teaches Korea a lot. So you know, in that context. And what have you adapted so far? The Korea, you know, is divided, Yes. and the DMZ is the borderline that divides both Can you come Koreas. again? What is it called? DMZ is a Right. demilitarized zone, so Okay. it's controlled It's by the DMZ. United Nations, and that is a dividing line. Right. And India also has such a line Yes. with Pakistan. Yes. Yes. Yeah, yes. control line. And you know, Colonel Changes told us about the story of peace initiatives between two countries. So in Wagah border, every day, you know, they do the flag hosting ceremonies. Yes. So every day. even though that they are in enmity, So are but you, at are least you putting that as in place at your border? like that could be one of the possible examples that we want to follow. Right. Yeah, and a special peace zone they created in Kartarpur corridor. Right. So that is the religious conflict in between. Right. So the Pakistan opens the border, right, and Correct. gives the free visa Yes. for Indians to make a trip to Sikh temples. Absolutely. So they can stay 1 day or so and come back without any difficulties. So they created special peace zone. We don't have such a special peace zone in DMZ area. That could be one of the examples that we can So follow. are you working on that currently? Yes, we are working on it, and we try to relate United Nations to border issues Do you in think it's Korean going to work out with North Korea in this case? North Korea is not very responsive, and of course, it's not easy situation between two Koreas, but at least we can try. Are you hopeful? I'm hopeful, and I visited several think tanks during my stay here in Pakistan. Like, for example, you know, Institute for Strategic Studies, Islamabad, Right. and the policy institutes, and the United Nations peacekeeping operations. So different think tanks, and I got the feedback that Pakistan could provide a platform for both Koreas. For example, Islamabad Conclave is one of the possible platforms in which both Koreas can participate, because it is difficult for South Korea to make a direct access to North Korea So and is vice Pakistan versa. going to be a negotiator? Is that what you're Right, saying? mediator, negotiator, possibly, and the people whom I met is quite active and positive in that direction. Do you think it would be difficult convincing North Korea on this, I or think easy so. convincing North Korea? Yeah, South Korea is easier to be convinced. Of course, but I'm talking Right. about North Korea North here. Do you Korea, think convincing is going to be the easy or the difficult part? difficult, but And how difficult? very I'm talking difficult. in terms of possibilities. Yes, possibility is not very high, but if the third party like Pakistan will make a move, so along with the international communities like United Nations, I think at least we can influence upon the thinking of North Korea. Right, right. I think I get my answer. Well, now let's talk about the good and fun things. Okay. We've talked about the serious matter quite a bit. So it's your first time in Pakistan, Mr. Lee. Right, this is my first Well, time. I hope the herbs and the spices didn't bother you too much tonight during Never tonight's bothered dinner. me. Yeah, Korean people like spicy food. As you know, we like kimchi. Yes, and I love. By Very. the way, it's my personal favorite, kimchi. I love it. Yes. And Dr. Song, I think you're quite used to herbs and spices, correct? Yes, yes. And what's your favorite, if I may ask?
Today, I enjoyed the what the Pakistan is The tandoori chicken? yeah. Also many Pakistani food. Right. We went to the Moscow, ne? It's on the food street. It's called Yes, Haveli. yeah. So thank you, gentlemen. It's your efforts that have made it possible, and I hope you keep coming to Pakistan. And all the best for all that you have planned. And thank you again. Thank you. Welcome back, and now I have Miss Cherry with me and Mr. Mudassir Cheema. Mr. Mudassir Cheema साहब से आपकी मुलाकात पिछली एपिसोड में हुई थी, और ये डेलीगेशन जो आ रही थी जिसमें इनका सबसे बड़ा किरदार इनका है, क्योंकि ही पुट इट टुगेदर। वो ले आए इस डेलीगेशन को। एक्स एम्बेसडर साहब से अभी आप मिल चुके हैं, डॉक्टर सॉन्ग से, जिन्हें हालिया आज ही इनफैक्ट फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी ने ऑनरी डिग्री से नवाजा। उससे पहले भी एक ऑनरी डिग्री मिली हुई है। सो ही इज अचीव्ड अ लॉट and he is still on his journey to achieve more, and we wish him all the best, क्योंकि उनका पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा contribution रहा है। मिस्टर ली भी जो इससे पहले आपने देखे, इस ब्रेक से पहले जो इस शो में थे डॉक्टर सॉन्ग के साथ, उनका जो एक सेंटर, उन्होंने एक फोरम जो एक फोरम बनाया, बल्कि वो फोरम क्या क्या काम कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को साथ लाने के लिए, और दुनिया से इंटरेक्ट किस तरह कर रहे हैं, वो आपने तमाम कहानी सुनी, एंड इट वाज फैसिनेटिंग। So let's wish him all the best as well in his effort. और अब जो मेरे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो इसलिए क्योंकि उनका प्रोफेशन भी वो है जो मेरा है, यानी जर्नलिज्म। मिस चेरी इज़ अ जर्नलिस्ट, एंड मुदस्सिर चीमा साहब तो आप जानते हैं कि पाकिस्तानी है, और साउथ कोरिया में जाके इन्होंने पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन किया। वेल, हेलो मिस चेरी, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you. एंड मुदस्सिर चीमा साहब, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग हियर, और ये खूबसूरत मेहमान यहाँ लाने के लिए थैंक यू सो मच। वेल मिस चेरी, यू नो what I just said to my audience. I said I'm very excited to interview you because you share the same profession as mine, that is journalism. How exciting is that, isn't it? It is first time to visit Pakistan. Yes. I really surprised and touched my heart. Really? Yeah, because I'm very interesting about history and culture. Pakistan is mother of civilization, Indus civilization. So It's played a great role. It has. So you went, the place where you went for dinner today, the food street, you must have seen the mosque built by the Mughals, the fort built by the Mughals. You must have seen that. So you must have learned so much today about us, right? yeah, How did you feel? great and good experience and gorgeous. Especially when I see people really happy because they are always smile. Pakistani enjoy life. You think so? Yeah. It's so good to hear that. Many people say, "Wow, Korea is very nice." And it's gorgeous, I hear. Your country economic growing very fast. Many people say good point, but almost Korean not smile because too much stress. But you're very smiley, Miss Me? Cherry. 0.5% Pakistani. That's why I smile. Right, but did you enjoy the culture, the environment, and you like Pakistani people? So Wow. you must promise to come again. Sure. You why will not? be, right? Yeah. Especially springtime, I wanted to visit Gilgit,
Pakistan. Gilgit-Baltistan, yes. Well, Mr. Mudassir Cheema is always out there to promote Pakistani tourism, so I believe you might as well request him to bring you here next time to visit Gilgit-Baltistan. That'll be fabulous, right? Yeah. So, Mudassir Cheema sir, they seem to be enjoying Pakistan quite a bit. So, have you achieved whatever you wanted to achieve? जो आप achieve करना चाह रहे थे इस trip के through इनकी जो delegation आई, क्या वो तमाम मकासद achieve हो गए हैं? Well, first of all, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा जितना फीडबैक आ रहा है। अच्छा। और आई एम सरप्राइज्ड कि बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं वो मुझसे रब्ता कर रही हैं और मुझे कह रही हैं कि जी हमें इनके साथ मिलाएं, और ऑलरेडी काफ़ी लोग मिल चुके हैं क्योंकि कल हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है FPCCI। बिल्कुल, डॉक्टर सॉन्ग ने बताया। हाँ जी, और BOI उसको होस्ट कर रही थी और उसमें काफ़ी पाकिस्तानी तरफ से भी काफ़ी बिजनेसमैन आए हुए थे मुख्तलिफ फील्ड से, और कोरियन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एग्रीकल्चर, फूड, टूरिज़म, स्पोर्ट्स के रिलेटेड थे और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड थे। तो वो B2B मीटिंग्स भी हुई और होपफुली आज एक MOU साइन होने वाला है इंशाल्लाह। हाँ जी। You understand inshallah now? Pakistanis say that a lot, God willing. Alhamdulillah. She said she's half Pakistani, so Good to hear that. Good to hear that. Well, so I know I have a Korean friend there. Right. So, जी, Mr. Cheema, जी. एक्सीलेंसी डॉक्टर सोंग ने बताई कि स्पोर्ट्स के हवाले से एक एसोसिएशन है, ख्योंगी टेक्वांडो एसोसिएशन, उनके चेयरमैन आए हुए हैं। वो 300-400 मिलियन डॉलर का कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और जगह ढूंढ रहे हैं अभी इस्लामाबाद में एक टेक्वांडो स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए। तो होपफुली 2-3 जो मेजर जो ब्रेक थ्रू हैं, बेंचमार्क्स थे, हाँ, वो होने वाले हैं। और जो मेन चीज़ है ना जो इन्होंने देखी है वो ये है कि पाकिस्तान एक लवली कंट्री है और फन लविंग पीपल हैं, वेलकमिंग पीपल हैं, लाइवली पीपल हैं। इनको बहुत अम्यूज की है ये बात। एक्चुअली पता है क्या, मेन जो सिचुएशन है ना दुनिया में, एक रिसेशन चल रहा है, इवन कोरिया में, हम खुश मुल्कों रहते में हम इतने स्ट्रेस के बावजूद, कहीं भी जाए, हाँ जी, जो भी हम खुश रहते हैं। यानी इतनी स्ट्रेस होने के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हालात बड़े ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं, मार्केट्स बढ़ी हुई हैं। Miss Cherry on this. Well, you know, Cherry, we're talking about the fact that regardless whatever the situation may be, whatever the circumstances may be, Pakistanis, touch wood, are happy people. We're happy people. We stay happy. So that's what I thought I'd let you in, let you know that why we sound so happy. We're happy about the fact that we're happy people. जी चीमा साहब। तो ये चीज़ इनको काफ़ी इम्प्रेस की है। इनको अभी तक जी हम टेक्सला ले जा चुके हैं, टेक्सला इन्होंने बुद्धिस्ट साइट्स देखी हैं। अच्छा। और जैसा कि एम्बेसडर ने भी थोड़ा बहुत बताया, बुद्धिज़्म के हवाले से, बुद्धिज़्म जो एक मेन चीज़ है जो इनको अट्रैक्ट करेगी कि इनके मुल्क में, साउथ कोरिया में जो बुद्धिज़्म पहुंचा था वो पाकिस्तान से पहुंचा था। बिल्कुल, तो वो मेंशन कर रहे थे। हाँ, तो वो ये है कि जब उनको पता चलेगा साउथ कोरियन लोगों को कि मेन जो हमारा रिलीजन स्टार्ट हुआ है वो पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ है, तो आप देखिएगा फ्लाइट्स भर के आएंगे। वो तो कह रहे फिल्म बनाए इस पे। हाँ। आपस में म्यूचुअली बन सकती है मूवी, उन्होंने काय बनाए। मैं पूरा इनको फैसिलिटेट करूंगा इसके ऊपर। फिल्म बनाने से ये फायदा होगा, लोगों को पता चलेगा कि उनके पास बहुत बड़ा हिस्ट्री का मेजर पार्ट है। यस, उनके पास बुद्धिज़्म कैसे पहुंचा। तो मेन हमें बुद्धिज़्म को सामने रखकर टूरिज्म के ऊपर करना है। कंस्ट्रक्शन एक फील्ड है जो बड़ी अट्रैक्टिव है पाकिस्तान में। लोगों का इंटरेस्ट आया है। हाँ जी, साउथ कोरिया से बहुत इंटरेस्ट आया। एक बंदा कह रहा था कि साउथ कोरिया में हर जगह पे अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ के इतनी बड़ी कॉलोनीज बनी हुई हैं, तो आप क्यों नहीं अपार्टमेंट्स बनाते? तो मैंने कहा अभी ट्रेंड शुरू हो गया है, जैसा कि इस्लामाबाद में। हाँ जी, कराची में था, लाहौर में अब हो गया, इस्लामाबाद में भी शुरू हो गया, कश्मीर हाईवे के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाहौर में बल्कि मेन सेंट्रल जगहों पे अभी ट्रेंड शुरू हो गया। Well, so what would you say about the beauty of Pakistan, the infrastructure that you've seen when you landed? How did you feel? Actually, Pakistan have everything. Big land and good scenery and green field and many trees. Everything is good. Even people beautiful and handsome.
Yeah, You think really, so? really. They'd be very happy to hear that. Yeah, I always say true story. Right. No, you're a journalist. You speak the truth. Yeah. Right. And Pakistanis very smart. They can speak at least 4 languages Yes, that's right. and very high level education. How to say education level. When I talk with Pakistani, I feel very proud because they are very smart. We are proud to be your friends, and frankly, I have had a wonderful time meeting you all. This trip, which Mr. Chima organized, and this delegation, and I hope it's fruitful mutually for you and us, and a good start for a further and a better friendship. Well, thank you so much, Ms. Cherry. I'm short on time. Otherwise, we would have continued the discussion. And Chima साहब, again, आपका तो खास बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. इतने ज़बरदस्त लोगों से आपने मिलवाया और उनसे इतना कुछ सीखने को मिला. There was so much to learn from them. लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मशकूर हूँ इनका, स्पेशली एक्सीलेंसी डॉक्टर सोंग जुगहमान, जो पहले पाकिस्तान में एम्बेसडर रह चुके हैं और उन्होंने आईटी पार्क इस्लामाबाद में बनवाया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लेके आए और अभी उन्होंने काफ़ी फैसिलिटेट किया इस डेलीगेशन को लाने में. वो हमारे डेलीगेशन के लीडर भी थे और इन सब का कि इतनी बुरी सूरत हाल में जिस तरह के हालात हैं, 1-2 धमाके वगैरह भी हो गए, खैर फिर भी ये आए और इन्होंने पूरा एंजॉय किया. हर जगह पे लोगों के साथ डांस कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. Absolutely. Well, thank you. थैंक यू सो मच.